हमने बहुत डिस्कस कर लिया है. Now we have to move to China. Okay, so you must be already knowing lot of things. You were not present ना? क्लास से चलती है ना? अच्छा, she didn't ask? अच्छा, फिर ठीक है. नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते गाइस. आज आपको ब्रेक भी नहीं मिलेगा. प्लीज कोऑपरेट आज. ठीक है, ओके, डन. सो टुडे we'll be discussing about India-China relation, but the way you have been knowing the China, we'll study in a different way. Reason being, because China के बारे में जितना भी आपको पता है, you don't know the history of China. So first we need to go back to the history, that how was China in 1960s, and was China well developed, or they were still doing better at that point of time or not. We need to know that. And from when they started actually getting back to the track, so there was a person, people say that the Xi Jinping, which is the current president of China, they do follow the policy of Mao. They are following the Mao strategy. Okay, what is the Mao strategy that you will have to read separately, but this is one information I wanted to give it to you. Next is Mao is what he did. He was more of a person who used to believe in the traditional form of doing things. For example, people sticking to their culture, people still doing the things which he always wanted to do. And by the way, he was also the part of it, right? He was there, but he did not used to like his strategy. Reason being, because he always used to say that people need to change. Now this is not the way you should believe in. And then what happened? They started saying that collectivization of the land should be there. What do you mean by collectivization of land? What do you mean by collective? Huh? Group what? Ownership. Yes, ownership. Yes, that is the right word. Ownership of the lands collectively. Like you are owning the land collectively. When people started having their land collectively, but what was happening? Communism to follow हो रहा था. People were very happy that communism आ गया है. Everything is going to be right. Everything is going to be, everyone is going to have a happy life. आपको livelihood मिलेगा. So 80% or around, I should say 85% of the people were dependent on agriculture during the Mao's time. 85 to 80% people were dependent on that. And during that time only he was exiled. Because the conflict was there, he did not used to find his strategy fine. And then he was exiled because there was some conflict which happened. I'll tell you. हाँ. ठीक है. So अब मुझे पहले हिस्ट्री बताइए कि कितने लोगों को चाइना के बारे में पता है, क्या पता है. पहले मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ. रीजन क्यों मैं जानना चाहती हूँ? बिकॉज आई वांट टू नो द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल, दैट आप क्या सोचते हैं वर्सेस कितना फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग है चाइना के लिए. एवरी वन ऑफ यू हैव टू गिव मी वन थिंग, और सब पार्टिसिपेट करेंगे. बताइए. कुछ तो पता होगा, कुछ भी. वन वर्ड अबाउट चाइना, एनीथिंग अबाउट चाइना यू नो, एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेटिव. इतना तो है, इतनी तो मेमोरी है दैट यू शुड नो दैट ये पॉइंट रिपीट हो गया. स्टार्टिंग विद यू श्वेता, स्टार्ट करिए. चाइना की एनेक्सेशन पॉलिसी होती है. कौन सी एनेक्सेशन पॉलिसी? ठीक है, आप ठीक है, कुछ भी बताइए. चलो स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे. कुछ भी बोलो, मेरे दिमाग में कुछ भी बोलो, कुछ भी. एनीथिंग अबाउट चाइना, एनीथिंग. मैप देखकर कुछ भी. यही बोल दो. चाइना इज लाइंग नॉर्थ टू द इंडिया.
यही कुछ बोल दो, कुछ तो बोलो। मुझे दिख नहीं रहा। चलो, वेरी गुड, वन ऑफ द लीडर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। क्विक, मार्केट कैप्चर, ओके, यू क्विक। शैंग और क्या थे? एशियन डायनेस्टी से, आप बताओ। हाँ ठीक है, चीपर स्किल लेबर, गुड। वहाँ का जो रिलीजियस पॉलिसी है वो काफी डिफरेंट है सबमिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक वहाँ पे ऐसे है कि आप अलग बुद्धिज्म और अलग तीन रिलीजन है उनको फॉलो करते हो, और एक और साइड है जिसमें आप कोई रिलीजन नहीं फॉलो करते। ओके, गुड। एनेक्सेशन के लिए डेट ट्रैप, वेरी गुड। आप बताइए। अपकमिंग सुपर, एक्सीलेंट। आप बताइए, कुछ भी बोलिए, स्पेलिंग ही बता दीजिए चाइना की, कुछ भी बोलना है लेकिन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, माओ आया था, माओ जब आए थे तब आया था, उसके बाद आया था, उसके बाद, वेरी गुड। चीप, गुड। गवर्नमेंट जो है, हाँ मैन्युफैक्चर होता है, सारा गवर्नमेंट के अंदर आता है। हाँ और उसके नेटिंग का कम से कम आता है। हाँ, एक कम्युनिस्ट है और ओके। China being the greatest support system of Pakistan, वो भी terrorism को सपोर्ट करते हैं। नहीं, terrorism को नहीं support करता है, उसमें भी terrorism है। वन लाइन में, वन लाइन में। मुस्लिम पॉपुलेशन, यूगर मुस्लिम है वहाँ पे जो terrorism वहाँ पे। ठीक है, आप, वेरी गुड। आप बताओ, कुछ भी बोलो। कोरोना, ओके गुड। इन्होंने तो एक वर्ड में माइक ड्रॉप। हाँ, माइक ड्रॉप कर दिया एक वर्ड में। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आप बताओ। एक्सीलेंट, ठीक है ठीक है, कुछ कुछ आप लोगों को पता है, पर बिट्स एंड पीसेस। हाँ, ओके, सो ओके, नाउ इट्स माय टाइम टू स्पीक। अब आपका चांस हो गया। ओके, सो द थिंग इज दैट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर एंड कि आप लोगों को कितना पता है चाइना के बारे में, बट बहुत कम पता है जितना पता होना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट वाज आई ओपनिंग। ठीक है, सो द थिंग इज कि माओ ने क्या कहा कि हम सिविलाइजेशन को क्या करते हैं, हम सेम व्हाट ही यूज्ड टू डू। सी फॉर द पीपल इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द यूनिवर्सिटी व्हेन माओ वाज देयर। इवन इफ आई somebody is getting like graduated, maybe somebody is like passing the 12th, they had this apprehension that whether they will be able to get the admissions in universities or not. Why? Because he sent the people back to the farms. He said कि आप लोग farms में जाइए, you practice that, because that is where the real labors are, that is where the real hard work is. So 80 to 90% are dependent on their livelihood. And then what happened, this everything changed when he was there. ठीक है, one thing you can write, कलेक्टिवाइजेशन। माओ के टाइम पे लिखिए, सिर्फ एक एक वर्ड में लिखेंगे, कलेक्टिवाइजेशन was sticking to the roots of traditions, was sticking to the roots, roots, roots of the cultural traditions. Students, or you can say people who used to pass 12, they were not allowed to get the admission in universities. Admissions in universities. Admission in university, simple लिख लो।
बस इतना ही लिखेंगे, बाकी आई गिव यू इन द नोट्स. It's Xiaoping actually. Xiao. There's a lot of confusion in Xingping, Xiaoping. So I can just remember the first name of everyone. Deng. So now what happened when he died? That was a real chance of the Deng to come back to the field and do the things which he actually wanted to do. So then what happened? He went to different parts of the world. He went to USA, he went to Japan. And when he went to Japan, it was eye-opening event for him. He saw that the things which were happening in Japan, how people are developed, how much people are, even the laborers were having what? Refrigerators at their home. So when he saw the laborers are having refrigerator at their home, they're having the luxurious life, right? Back then, even it was said that Mao ke time mein agar somebody is possessing a bicycle, that means he is very, very rich. I'm using too very, that means how much rich he would have been if he's owning a bicycle. So Mao ke time mein this was a condition of the people. And when Deng went outside, he saw the world, he saw that people are having assembly, they are manufacturers or the laborers, they are doing fairly well, and how well developed they are. He saw the trains also in Japan. Then he came back and he said, everybody needs to broadcast how people are actually living in outside the world, right? How around the world, how people are living, this should be broadcasted to the Chinese people. What happened then after, thereafter what happened? People started realizing कि हम लोग बहुत पीछे हैं, right? In terms of technology, in terms of our lifestyle, in terms of even the kind of a strategy that we are using. When he went to USA, he realized the fact that capitalists have just taken away everything. And then फिर Deng ने decide किया कि मैं अब ये नहीं देखूंगा कि कम्युनिज्म है, so आपका collectivization होना चाहिए, ये होना चाहिए. He just got into a strategy that मुझे इस country को develop करना है. I want the people of this country to be happy. I want them to be developed. And then, first of all, what he did, he started the education program for his students. That is the first thing he knew, because he wanted to upgrade the middle class. He knew that middle class are also suffering. Not only the lower class, the middle class are the one who can actually take your economy from this level, one level to another level. So he opened the universities. For the first time, he said everybody can conduct the examination. So people were really happy that finally we can be somebody who is 12th pass, right? Who is having this for example in higher schools, and then think of the fact that students को पता है कि universities में admission नहीं मिलेगा, तो उनका motivation कितना नीचे होता होगा. But जब Deng आए, उन्होंने बोला पहले आप conduct करिए सबके लिए examination. Although the ratio of the students who could be admitted was very less, बहुत ही कम था. And then he opened the exchange programs with USA. At that time, Jimmy Carter was there, the president of USA. He met Jimmy Carter. Jimmy Carter ने बोला कि ठीक है, we can start the exchange programs. At that point of time also, USA helped China a lot. Especially Deng, he said, whatever you need, whatever help you need, we'll be able to give it to you, and we will open an exchange program for your people. Then Chinese went outside, but Deng knew the fact that people are not going to come back. Reason being, once you have tasted something which is better than what you already have, you will never going to come to the square one. So the fact is, Deng ने बोला that ठीक है, exchange program start हुआ, and that's how the people got exposure. उनको पता चला कि हम लोग बहुत पीछे हैं. उसके बाद what they started having the exclusive economic zone. Exclusive economic special zones उन्होंने खोल दिए किस चीज के लिए? For their industries. They opened the exclusive economic zones for their industries, and they knew after that what will happen. वहां पे उन्होंने industrialization start किया. This area, right? A lot of this part of the area, they started the industrialization in this area, exclusive economic zone. They provided the subsidies, they provided everything which is required under the sun to make them a good manufacturing hub. And then they started what? Manufacturing ही नहीं. They took the technology. It's not like they did not take the
help of a lot of countries. Japan was the one who helped them a lot. USA was the one who helped them a lot in the inclusion of the technology. So this is how they updated themselves from one level to another level. How many of you can understand this? समझ में आ रहा है? ठीक है? This is the background of who actually, and Deng ही है जिनको लोग मानते हैं कि he's the one who has changed the whole image of China. Because यहाँ ये नहीं होते तो he would have not taken the policies which would have been so aggressive. He took aggressive policies. He said that मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कैसा आप modus operandi आप use कर रहे हैं, but the point is, and the till the time it is beneficial for my citizens, till the time my economy is growing, I don't have any problem. Apart from that, one major thing he did was to give the education to the women. Why? Because he knew that the population, the kind of a contribution that women are giving to the population is huge. So the contribution of them in the GDP should also be fairly well. Then he started educating the women. They said that you should get the fair chance, and that's how they got into the economy. And till now, 27% of the women are contributing in their GDP, which is a fairly good ratio as compared to many countries who are in a developing stage and developed stage. They are still managing the things. Okay? Right? And then what happened in 2000, you know the situation, 1970 से आपका 2008 तक, ठीक है, to 1970 80s ही लगा लीजिए आप, that यहाँ से यहाँ तक they had a good time मतलब they were progressing at their own level, but the kind of progress that they made is exponential. ये एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, दे न्यू वन थिंग कि हमें ये चीज अचीव करनी है, एंड दे आर स्टिल एट दिस, दे आर फॉलोइंग दैट स्ट्रेटेजी ओनली कि हमें जो अचीव करना है हम करके रहेंगे, राइट? किसी भी कंट्री को सेल्फ रेजिलियंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई ही हैज चेंज्ड द बैलेंस ऑफ पावर इन टुडेज टाइम. बैलेंस ऑफ पावर कब चेंज होता है? व्हेन यू स्टार्ट शोइंग योर assertiveness in the area. That is the word. Assertiveness आप दिखाने लगते हो अपने एरिया के अंदर, तब आप माने चाहते हो कि you have your some say in the area, your Asia, this area I'm talking about. ठीक है? So 2000 सब तक सही चला. They were having a good relation with USA. They were helping semiconductors, chips जा रहे हैं या फिर कुछ भी material export हो रहा है USA में. All that started happening. But China को problem अब कहाँ पर आया? 2008 तक they had a peaceful rise. इसको बोला उन्होंने peaceful rise. Peaceful rise मतलब underground होके चुपचाप अपना सक्सेस पे काम करना. मेजरली इसका मतलब ये है. पीसफुल राइज मतलब ये. They will start doing their own. उन्होंने कोई एक्सपेंशन ज्यादा नहीं दिखाया because they knew this is not the right time. But after 2008, when the Lehman Brothers crisis hit, right, then they started showing कि नहीं, now it's my time, I'll show. And then the kind of what you know, the rest is a history. You know that what happened in the East China Sea, South China Sea, and then the different projects they are aiming at. So I'm talking about the one project which is your BRI, which is Belt and Road Initiative. So what is the Belt and Road Initiative? So first of all, consume this whatever I have given it to you. पहले आप मुझे ये बताओ, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, because this is now we are coming to today's time, that how, what actually they are doing in BRI and why they are doing BRI. आकृति, लक्ष्मी, पलक, जहांगीर, बताइए. अभी तक किसी को किसी चीज में कोई भी डाउट है? पक्का? ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू BRI, बताइए क्या है बेल्ट? क्या पता है आपको इसके अलावा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन. और क्या है ये? क्यों कर रहे? क्यों ये? व्हाई दे आर गिविंग द लोन्स? बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, दैट दे आर गिविंग द लोन्स. ट्रैप में फंसा के क्या होगा? कैसे हो जाएगा ग्रोथ उनका?
खड़े हो गए और उसके बाद जब श्रीलंका पेबैक नहीं कर पाई तो फिर बोले कि अपना जो पॉट है वो दे दो। तो उनको नुकसान नहीं है? नहीं, one giving $1 billion to countries, $1 billion to countries is like giving like too much. ये तो overreach exhaust हो जाएगा वो. क्योंकि और बाकी लोगों को different countries who are superpowers like USA. जैसे यूएसए अपने नेवल बेसेस लगाने के लिए इन्वेस्ट सब इन दैट कंट्री है फिर वो परमिशन ले लेते हैं जैसे चाइनीज हैव एक्सपैंडेड पॉलिसी कंट्री वाइडली में टैक्स और टैरिफ लगा के फिर उसे गेन करेंगे। टैक्स तो नहीं लगा पाएंगे, टैरिफ भी नहीं लगा सकते क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई देगा नहीं। कंट्री पेबैक नहीं करेगा फिर क्या करेंगे कि वो किसी तरह तो वो लेना होगा वो लैंड कब्जा करेगा। अगर इंडिया को भी इंडिया को क्या है? इंडिया वहाँ पे आराम से इंडिया में इन्वेजन कर सकते जब उनको मन करे उस पॉइंट से। फिर वहाँ पे जो चिकन्स वो है नेक वहाँ से भी देखिए, listen, see, right now we are having a major trade route, and for the China also, this is the one of the major trade route. This one. लोन देने से लोन के ऊपर टैक्सेस ना सकता है ना, इंटरेस्ट आता है, टैक्स नहीं है। इंटरेस्ट देने लायक कोई रहेगा नहीं तो कैसे होगा? वो आपका उसमें चला जाएगा एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सी दिस इज वेयर चाइना's वीक पॉइंट इज। दिस इज अ सेंसिटिव, किसी की भी यू कॉल ना इन हिंदी नस पकड़नी हो तो चाइना का नस ये है, विच इज योर मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, सो मलक्का स्ट्रेट इज वन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, नहीं वो बोलने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए। गुड अनिकेत, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। okay, Strait of Malacca, from here the Chinese goods are transporting from this part to different parts of the country, and almost 60 to 70% of the trade is happening from here. 60 to 70%. It's not like that we are not having the other states here. There are other states, but I would say that Singapore, because it's just down the Singapore, they are so blessed that the ships cannot go from these straits. The ships cannot pass through these straits because of the topography of that island. They cannot pass through this. So there is no alternative in this area apart from Malacca Strait. So therefore, every country is having a good relation with Singapore. Once you do not have a good relation with Singapore, your goods are going to stuck here, right? So everybody knows the weak point. And apart from China also knows this. Okay, हम अगर कुछ भी करते हैं and our goods are here, so now we have to be very careful about that how relations of China is with the Southeast Asian countries and how their relation is with respect to Singapore specifically. Okay, so this is what your Malacca Strait. Apart from that, it is also said that earlier they used to
ऑलराइट, ठीक है ना, ठीक है. सो दिस इज व्हाट. अब ये BRI प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, that they have to talk. Almost 60 countries have now said yes to BRI. They are got into partnership and they are saying, okay, whatever you are doing is a win-win. I have done that. So it's a win-win situation for all the countries, that the way they propose it. See, pehla point ye hai why they are giving the loans. The first thing is that for any country who is having a weaker economy, any country who wants extra investment, so one way to take the investment is through the different countries, right? Another way is to take from the World Bank. Now you know that the World Bank are highly influenced, and the kind of the paperwork that you have to do in order to get the loans is very, very tedious and cumbersome. So what they provided an alternative to what World Bank is doing for the different countries. What alternative that they are having? Kya alternatives hain? That China can lend the money to them, and that too very high money. अगर आपको मनी चाहिए होगा किसी भी कंट्री को, then who you have to look up to? World Bank, right? We have to look up to World Bank. So अगर World Bank पे आप नहीं ले पा रहे हो, या फिर because they have to do a lot of paperwork, then what you have to do, you have to switch to another country which is China. ठीक है? So China से आप क्या लेंगे? लोन. ठीक है, लोन लीजिए. चाइना इज ऑफरिंग, वो बोलते नहीं, वो फोन करके बोलते हैं, लाइक हम जैसे जिसको लेना नहीं है उसको भी दे देते हैं वो लोग, राइट? हाँ, बैंक जैसा. ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करते हैं. और फिर इंसान सोचता है हाँ ये जरूरत तो थी, लेट मी थिंक. ठीक है, और फिर वो इस तरह से दे आर ट्राइंग. सो पहला पर्पस इज दिस, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हु कैन प्रोवाइड द मनी very, very quickly. So because of that also we have what? China money lenders, right? Why they are lending the money? First thing is that because they knew that what is the problem with the financial institutions, your world financial institutions. Second is that they want to attain the strategic locations of different places. For example, this, here it is, this yahan pe, not this one. This is your Pakistan, this port. Then in Italy they have said no, right? So this is the whole route that they want to take. Now apart from that, they also know that, for example, Djibouti, they are having a good base here. Apart from that, they are having a good base here in Hambantota, right? In Myanmar, they are having a good base here in Myanmar, right? Then they are having a good base here in near Vietnam also, right? And that's how they are creating what this is known as string of pearls. This is a whole strategy to create a string of pearls here, so that they can have a expansion and they can trade easily. ठीक है, अगर यहाँ से भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, then they can trade easily from here and there will be no problem in case you try to block their passage from the Malacca Strait. ठीक है, got it everyone? आप लोगों को at the back कितने लोगों को समझ आया? Shall I repeat? हाँ, आपके लिए? अच्छा, आप बताइए पीछे हो जाएगा या फिर समझ आया है? दोनों में डिफरेंस है. करेक्ट करेक्ट. नेवल बेसिस तो बना ही देंगे ना वो. जब वो डेट पे नहीं कर पाएंगे, what will happen? Ultimately they have to give the land. See, if they won't be able to pay the money, then what they have to do? A country has to secede the land, right? Once they will secede land, then they will take that land. For example, a port that they are taking, and port पे क्या रखेंगे? They will put a naval basis.
चीज है। हाँ हाँ, दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट दे आर फॉलोइंग. क्या हो गया? हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या हो गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में हुआ कि चाइना ने उनका रेलवे नेटवर्क बनाने का हम्म. तो वो किसके अंदर है? लाइक उन्होंने मनी लैंड करा, वो रिपेयर नहीं कर पाए, इसलिए वहां पर नेटवर्क लैंड नहीं बना रहे हैं, फिर उन्होंने वो लैंड लेने का प्रोजेक्ट लिया सिर्फ, और उसके बाद उनका क्या करना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं कुछ कुछ. फिर उनका उस पर कंट्रोल कैसे रहेगा? लाइक वहां के लोग मतलब लोग, मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि उन्होंने अपना रेलवे पूरा बना दिया, तो उसका क्या स्टेक होल्डिंग है उनका? पूरा रेलवे नेटवर्क बना दिया. क्या स्टेक होल्डिंग है किसका? चाइनीज का. तो पीपल विल बी देयर ना टू टेक द कंट्रोल. नहीं, फिर उस कंट्री के लिए क्या बेनिफिट है? उन्होंने बनाने दिया इन्वेस्टमेंट, उनके लिए तो ये हो गया कि सी उनको भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना. फॉर एग्जांपल 1853 में व्हाई इंडिया अलाउड टू मेक द रेलवेज? पर्पस तो किसका था? क्योंकि ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उनको गुड ट्रांसपोर्ट करने होते थे. वो रेलवे लाइन उन्होंने इंडियंस के लिए थोड़ी ना रखी थी. द रेलवे लाइंस वर पुट फॉर द military basis, sorry, for the transportation of the goods, and for the transportation of the goods they did that in 1853 from Thane, right? It started, so first railway track started. लेकिन पर्पस उनका था. अब पर्पस दोनों, अब यहाँ पे भी दोनों का ही पर्पस है. वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? बिकॉज उनके पास इतना मनी नहीं है कि इन्वेस्ट कर पाए. अगर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, या तो हम ये कर सकते हैं कि खुद का मनी लगाएं, या फिर ये कर सकते हैं किसी और को बोले. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेट्रो लाइन्स भी हमने खुद थोड़ा ना बनाई है. वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ, आई टोल्ड यू व्हाट इज द नेम, ODA, right? We have taken the help of them, and then we are giving back interest to them. हाँ, they will be, because see they are investing in that ना. हाँ हाँ, ऑब्वियसली. ऐसे थोड़ा ना, वो स्ट्रेटेजिक पहले जाके आप किसी को बोल दोगे कि हम आपको इसलिए लोन दे रहे हैं क्योंकि हमें आपका घर चाहिए. कोई देगा? कोई लेगा लोन? ये तो यही तो स्ट्रैटेजी है, तभी तो उसके आगे स्ट्रैटेजी लगा है. और सॉफ्ट नहीं, ये सॉफ्ट नहीं होता है. दिस इज नॉट सॉफ्ट. सॉफ्ट होता है जब आप अपनी इमेज बना, तभी तो उसको ट्रैप नेम दिया गया है. अगर गॉड यू गाइस, एक सेकेंड, ट्रैप नाम क्यों दिया है इसको? ट्रैप नाम दिया ही इसलिए क्योंकि फंसाना है. दैट ट्रैप स्ट्रेटेजी. अगर आपको पता है, आप मैनिपुलेशन में डिफरेंस है ना. फिर डिप्लोमेसी क्या हुई? व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोमेसी? आप तो करी, आप तो मैनिपुलेट ही नहीं कर पा रहे हो. करेक्ट. हाँ बिल्कुल. अब आप ये थोड़ा बोलो कोई आगे डायरेक्टली कहा मेरा ये फायदा. सी व्हेनेवर यू डूइंग अ डील, इट्स नॉट अबाउट मी. हाँ, हाँ उसी का ही है ना. मतलब बाकी भी यूज करेंगे ट्रेड के लिए, लेकिन मेजर चाइना में ठीक है, डन. अब घर पे जाके व्हेन आई गिव यू द नोट्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो पढ़ना, BRI प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना, व्हेन आई गिव यू द नोट्स. ठीक है. बट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या है. अब नेक्स्ट थिंग इज विद चाइना. This is the route that I was talking about. This is your string of pearls. Again, if somebody did not get it, and this is several dots connected together. That's why string of pearls. yes. Okay. Now, next problem with China is that they want to have the expansion, and I tell you how India is trying to contain China through the Great Nicobar project that I'll also discuss, but not right now. The first is that China having a different kind of a strategy. See, I told you that exclusive economic zone is the one
till where you can just have your own minerals, you can extract, you can extract your oil if it is found within the country, within that zone. So there are countries which are present here. For example, Philippines is present here, right? Malaysia is here, and then you can see Taiwan, ऊपर Japan आपका, ठीक है? So this is how the things are there. Now, point is that everyone is claiming their exclusive economic zone, right? Which is your EEZ, and within that they are saying that हमारा जितना भी area है, this area which is lying within EEZ is ours, and whatever we want to explore in that area, we will be keep on exploring. We will having a naval basis. Whatever we want to do with our land, we will do that, right? Fair enough, because that is what. Now, China is not liking this, that people are trying to claim their EEZ area, and they said come with another strategy. They are saying that we are having a 9-dash line. Now this 9-dash line is something different from what people say, and they are having another history only, that we used to have our expeditions, naval expeditions in the previous civilization, in the old civilization we used to have that. So they are coming with that the thought process, and they are saying ये जो 9-dash line है वो अपने मैप में इस तरह से दिखाते हैं इसको. They show, whenever you see the China's map, they will try to show it through this, and they say this all area which is this is ours. This is ours, right? They do not consider the international treaties. They do not consider the high sea treaties. They do not consider anything with respect to UNCLOS. They say whatever has been the part of it under 9-9 is ours. And whosoever will try to claim it, they will have to face the repercussions of that. What else they are doing is they are so smart that they're trying to build the artificial islands, and these are known as man-made islands. They are so quick and fast in the construction that overnight they have been the case in 15 days or 10 days they have been able to make a island, right? रात को island नहीं था, सुबह देखा तो island है वहाँ पे, right? Claiming that this is ours. और फिर वहाँ पे उनके नेवल बेसिस पे खड़े होते थे. Now this is the fact which is USA is not liking. And why USA is not liking? The reason being because USA is ally of Japan, definitely because allies के आप attack करें, because you will then say कि USA को क्या problem है? USA is so far. Right? Why they are having so much of problem? First thing is that they always wanted to contain China. Reason being that anything unfair which is happening, USA has to say, they have to interfere. The second is that being an ally of Japan, they have to see what is happening. Being an ally of Philippines, हाँ, नहीं, दुश्मन का it's enemies is our friend. It is Kautya's strategy. No. It's enemies is our friend. For example, Afghanistan is our friend because we kind of have an enmity with Pakistan, right? Right. Okay. So it's enemies is a friend. That's a Kautya's. No, that is not the only reason. That is not the only, guys. See, it is not because USA is so they are maintaining their friendship. They are having so much of loyalty towards Japan. That is not the case. Listen, the main thing is of the USA, guys. Okay, the main thing why USA is trying to attack the area because see, USA भी किसी के favor में नहीं है. It's not कि Japan का friend है तो they are doing. Please God, get out of that mentality, everyone. It is the vested interest of USA that they are coming here. South China Sea, this East China Sea, they are heavily filled abundantly with the minerals. We talk about critical minerals. We talk about the nodules. They are filled with that. And whosoever has the claim of that area, they will be using those minerals. हम इसलिए वहां पे जा रहे हैं. Vested interest है countries का. हाँ, इंडिया नहीं जा रहा है, इंडिया आप कंटेन कर रहा है. ठीक है. क्या था? लाइट बबल मैं उसी में
हाँ, आप लोगों को पता है? आप पहली बार? मैंने भी पहली बार देखा। मतलब I always ask, if somebody is new in the class, I always ask, have I done orientation with you? अच्छा, मतलब you know. अच्छा 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 okay. Your friend? Your friend? अच्छा, भूमिका's friend. श्वेता, आपकी पर्सनैलिटी देख के मुझे लगता नहीं है। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। नहीं ठीक है। मुझे लगा आप लोगों को पता होगा, तभी आप ऐसे नॉर्मल हो बिल्कुल। अच्छा ओके ठीक है, गुड ओके। हाँ मतलब हाँ, मैं यही तो देख रही थी। ओके डन डन फाइन ठीक है। सो पॉइंट इज हियर 9 डैश लाइन राइट। सो 9 डैश लाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बैक टू आवर स्ट्रेटेजिक point of view, right? So point is that तुम लोग सारे you guys are so mean. अब सुन लो मेरी बात, ठीक है? So ये जो vested interest है USA का, अब USA का vested interest क्या है? That they want to have the critical members, right? और भी reasons हैं, ठीक है? This is one of them. Now they are having an issue with this. There was a news that Philippines, they are trying to make, this is your Scarborough Shoal. Here they are trying to make what? Nature reserve. Who? China. And when they are trying to make a nature reserve here, Philippines is having a problem because they are saying, they are claiming this is a disputed island between China and Philippines, right? And also now of USA, that how can you make nature reserve here because this is a part of the EEZ of Philippines. You cannot do that. Similarly, they are having issue with Japan also. They want to have that area, some of the islands which they say is theirs, which are coming under part of 9-9. That is something which is very much contentious, right? Next is your okay, ये भी आप देख सकते हैं, this is Gwadar, this is Sri-Lanka, right? यहाँ पे आपका चिटगांव है, here they are having, यहाँ पे म्यांमार में they are trying to, if you want to write the port's name, you can write, these are some of the port names. In Maldives, they are investing in Evandi, Polu, this is Hambantota, this is Chai Pew, this is Chittagaon. तो सारे हैं, नहीं पोर्ट है ये हम्बनटोटा, इट्स अ पोर्ट इन श्रीलंका। अभी ये वाली लिखो पहले, राइट डाउन द नेम्स ऑफ दिस। हाँ पोर्ट, ये पोर्ट्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के पोर्ट्स, जहाँ पे वो अपने बेसिस बनाना है। हाँ चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। अभी जब वो कैप्चर करेगा तब मैं बता दूंगी। हाँ
अरे देखो attack on me is attack on my students. Defense. Thank you guys. See, these are the names that you have to see and write. Ivahan dihi pohulu. Yes. It is like this only. It is like this only. हाँ बताओ. लॉजिकल डाउट है इनको मैम. बोलो बोलो. चाइना का इधर से स्टेट ऑफ मलाका से तो वहाँ पे इशू पड़ता है He's asking. उनका पाकिस्तान का स्ट्रेटजी पार्टनरशिप ठीक ठाक है हाँ, उनके यहाँ पे हाँ, हाँ. तो उनका बाय रोड नेटवर्क पाकिस्तान से कनेक्ट करके किसके रोड? ग्वादर के? ग्वादर तो यूज कर रहे हैं ना? डायरेक्ट अगर वो यहाँ से चाइना से बाय रोड वहाँ से डायरेक्ट शिपिंग शुरू करेंगे चाइना से बाय रोड ग्वादर से अपना. You are trying to say कि ऐसे क्यों नहीं आ सकते ऊपर से? वो भी तो बन रहा है ना? हाँ. पाकिस्तान अपना पूरा नहीं दे देगा ना? उनका भी तो पता मतलब I don't know. मना नहीं करेगा कि हम और हाँ. अरे भाई लेकिन जहाँ बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान का मैच है ना भाई मैं नहीं बताऊंगी अब. मैं नहीं बताऊंगी अब. हाँ नहीं. See, point is जो आपका ग्वादर पोर्ट, दिस इज योर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स व्हिच इज हियर, ठीक है. अब पॉइंट इज पाकिस्तान भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सब कुछ नहीं दे सकता ना, और कुछ आपका चैलेंजेस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी है, इंटरनली आप नहीं जा सकते वहां पे. तो यू आर ट्राइंग टू से कि ये यहाँ से क्यों नहीं कर सकते, ये से राइट दिस. हाँ एग्जैक्टली क्यों नहीं कर सकते. सी उसके में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान अलाउ करता है नहीं करता वो चैलेंजेस है, बट डेफिनेटली उनके लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी रहेगा अगर टोपोग्राफी अलाउ करती है तो. दूसरी चीज ये भी है कि पाकिस्तान इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स आल्सो, दे हैव टू सी दैट टू, राइट. हाँ कॉस्टली तो होगा ही, बट फ्लड्स की आपको वो आगे चीजें भी देखनी पड़ेंगी ना. हाँ इट्स जस्ट लाइक सेइंग अमानी के पास थोड़ा कमी है कोई पैसे की. It was just like रिस्क ले रहे हैं वहां उतना कम उधर है. सी वो तो ठीक है, बट द पॉइंट इज आपको दोनों ही सी लिसन आपको नेवल्स रोड ही नहीं, आपको नेवल भी तो ओपन करना पड़ेगा ना. कोई रीजन होगा ना, अगर आपको पता है रीजन तो मेरे को बता दो, कोई और बेटर रीजन है तो. यही है कि जब यहाँ पे उनका काउंटरपार्ट है तो बाय नॉट जो उनका स्ट्रेटजी है उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन अब ये भी तो देखिए ना कि यहाँ पर अब यहाँ से आएंगे फिर यहाँ पे बना के फिर यहाँ से फिर लेकर जाएंगे. एक तो ये हो गया, दूसरा शॉर्टेस्ट रूट हो गया आपका. हाँ आपने अंदर बताया ना यहाँ पे नहीं, यहाँ से यहाँ पे भी तो फिर रोड्स आपकी आ जाएंगी ना. हाँ 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 हाँ. I'll research about it. नहीं, just a good point. I'll research about this. ठीक है. हाँ. ऊपर से तो कम, ऊपर से ना चाइना
मैं सर्च करूंगी इसके बारे में कि व्हाई ओनली दिस रूट। आप जो रूट सजेस्ट कर रहे हो वो चाइना ने क्यों नहीं सोचा, है ना? नहीं सोच, क्यों नहीं सोचा, उसका रीजन भी तो निकालना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं क्योंकि पाकिस्तान को पता है वो रूट अगर बहुत सिंपल हो तो समझ जाते हैं कि चलो नंबर वो कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे इंडिया भी तो विड्रॉ करना चाहती है अपनी फोर्सेस वहां से, साइचिंग और स्केचिंग वाले एरिया, वो अलग इशू है, वो इंडिया चाइना से नहीं हम उससे कनेक्ट करेंगे, हाँ ज्योग्राफिकली भी पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, हाँ ज्योग्राफी बिल्कुल सही बात है कि अक्साई चिन पे इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ वहां पे वो तो हमारे स्टीप सी हिमालयस, आपको पता है हिमालयस किस तरह से है? द नॉर्थ साइड ऑफ द हिमालयस इज स्टीप, द साउथ साइड ऑफ हिमालयस इज जेंटल, दे आर हैविंग अ स्ट्रक्चर व्हिच यू कॉल इट एज हॉग बैक, you call the structure of the Himalayas hog back, HOGBACK, ठीक है? and this is also a blessing for India that क्या आपका जो steep side है they won't be able to go top to that topography, ठीक है? मॉनसून वाला ये हाँ विंटर वो तो पास कर ही रही हिमालय से, अभी न्यूज में आ रहा है कि हिमालय अब इंडिया के लिए प्रोटेक्टेड होगा। अब नहीं है, कहाँ? You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference. मैं बहुत जिद्दी हूँ, मुझे पता नहीं है तुम्हें। मैं बहुत जिद्दी हूँ। चलिए उनको किसको पहले सेंस हो गया था? चलिए all right, can you hear? ठीक है. Students, nothing major has happened in between time. We had just discussion of some of the important what we have discussed so far. हाँ करेक्ट. सो पॉइंट इज जो आप इश्यूज रेज कर रहे हो कि आज ऐसा स्ट्रैटेजी है, ये है. आई विल ट्राई टू रिसर्च अबाउट दिस कि वो वाला रूट क्यों नहीं जो आप सजेस्ट करें. एंड इट्स ओके, यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस कि वो वाला रूट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. सो आई ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस कि क्या क्या उन्होंने भी तो सोच के ही इतना इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही करा होगा ना. सो दैट इज व्हाट. So पहला चीज is this, and second I hope you have written the names of all the ports, right? ठीक है. उसके बाद we are coming to India and China's problem. What is India and China problem? Aksai chain, right? Why they want to take Aksai chain? This is not the part. This is the Pakistan one. ये Aksai. क्या क्या इश्यू है बताओ. हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? बताओ. दिस इज LOC, दैट इज XI. बताइए एक आपका इशू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में भी है. ठीक है. हाँ अच्छा कब हुआ? नहीं एक्चुअली पॉइंट इज नहीं ये जो पॉइंट है अक्साई चेन का, देखिए ये इशू इसलिए चल रहा है अभी. वी हैव द सोल्जर्स प्रेजेंट हियर, राइट? हाँ, सो बेसिकली यू हैव हाँ टैंक्स और रिवर इट इज देयर. ठीक है गाइस, शी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू टू से. इट्स ओके. It's a point of view to say. It's okay. She wants to just add on something. ठीक है. So administered जो लोग हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है that western part है, eastern part है. ठीक है. जो western part है आपका वो क्या है? This excite chain. और eastern part में क्या है आपका? कहाँ होने के? क्योंकि यहाँ है ये excite chain. ठीक है. नाउ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, वहां पे भी एरिया है. दे वांट टू टेक दैट पार्ट. ओके, वो अपना ही उनका कोई स्ट्रैटेजी है. वो अपने मैप्स में भी यही दिखाते हैं कि ये वो एरिया उनके पास है. बट पॉइंट इज इंडिया इज ट्राइंग टू टेल देम, नॉट टेल देम बट दे से दैट दिस इज देयर पार्ट ओनली. ये ऑक्यूपाई करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं. रीजन क्या है कि वी हैव पुट दिस soldiers also, or topographically this area is very very tough, right? And the kind of sturdiness, the kind of the temperatures that they are having, the weather they are having is in the negative, right? minus 20 degree 40 degree जहाँ पे आपके soldiers खड़े रहते हैं. And the kind of the thermal equipments that they wear.
Yeah, it would have been right, because the kind of वहाँ पे जो soldiers होते हैं वो उनकी भी training बहुत ज़्यादा tedious होती है, बहुत ज़्यादा pointers, बहुत ज़्यादा उनको उस हालात में रखा जाता है, so that they can be resilient when the tough times come. Okay, इससे पहले when जवाहरलाल नेहरू was there prime minister, और उसके बाद भी जब हमारा उनके साथ conflict था, we realized that we are not having the proper equipments for the soldiers. They were having a normal shoes and they were fighting with that, but that was not the right way of putting the soldiers on the front line. You need to equip them, you need to have given the right instruments to them, so this happened, but they still fought, and that is a spirit we still remember about our soldiers. So one thing is this, and apart from that, उनको like they were China were like कि हमारा market अगर हमारा भी happen करती है तो we was not okay with it, तो इंडिया से help मांगा, इंडिया ने help किया, and that is the time जब China खिलाफ हो गए. In this Tibet autonomous region, you're talking about Dalai Lama, right? We gave the shelter to the Dalai Lama also. That was also point, because they want to remove the Dalai Lama from there. They said nothing is going to be followed here like this thing. So Dalai Lama was given a shelter in India, and then they said that okay, ठीक है. Even after agreement कब हुआ था पंचशील का 1960s में, ठीक है. तो पंचशील agreement which happened, and then पंचशील एग्रीमेंट में क्या बोला गया था कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, we will try to distance ourselves from this area, right? Both the parties, both the countries will try to distance themselves from the area. पंचशील के कुछ points है, 5 points है, उनको प्लीज पढ़ लेना. पंच means 5, ठीक है, 5 points है, उनको पढ़ लेना. और पंचशील एग्रीमेंट हमेशा वॉयलेट ही हुआ है जब से बना है, ठीक है, कभी फॉलो नहीं हुआ है, राइट? उनको कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बोला गया था कि यू हैव टू डू योर कैपेसिटी बिल्डिंग इन दिस एरिया. दोनों जो ट्रुप्स हैं वो साथ में मिलके दे विल ट्राई टू. करेक्ट, बिल्कुल, ठीक है. जो तिब्बत और एक्स से कौन सा जगह है, अच्छा, what is the name? XIJAM. अच्छा, okay, you're talking about the tribal groups. हाँ, समझ गई मैं. 1950s में चाइना बिल्ड करना स्टार्ट किया था NH तिब्बत और वहाँ. Okay. तो उससे ये एक्साइटिंग वाला ज्यादा बढ़ गया. अच्छा, okay. Indian China. Okay. There is a lake also which is present there, which is a Fong So Lake, right? And it's a very important lake here. This can be asked. This is your Siachen Glacier, right? This was also asked in one of the exam. Here you have a Nubra Valley. यहाँ पे आपका Nubra Valley है. यहीं पे आपकी river निकलती है Shyok, which is a tributary of Indus. Indus की tributary है. ठीक है, ये आपका गलवान वैली है. अगर किसी को गलवान वैली जाना है, द शेड व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ विद येलो कलर इज योर गलवान वैली. एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट. देन इंडिया एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, ये आपका नीचे. फिर देन नेक्स्ट थिंग इज योर आई थिंक अरुणाचल वन आई हैव नॉट टेकन. यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है. दिस इज योर लाइन एंड हियर इज योर अक्साई. दिस इज योर अरुणाचल. तो दो जगह से दे हैव कैप्चर. वन इज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इज योर अक्साई चेन, और राइट वन इज योर अरुणाचल विच इज अ इशू, राइट, फॉर द पीपल. ठीक है, यहाँ पे भी वही सारे पोर्ट्स मार्क्ड है. इफ somebody has not written from there, you have a port here. You saw that there was some topple, the government got toppled in Myanmar, right? Do you think many of the papers also has claimed that it was China who actually did that? They were the right. सही है. हाँ, मतलब the point, because see, inclusion similarly happened in Sri Lanka में भी यही हुआ था. They said when Sri Lanka was in tough time कि हम आपको help करते हैं, and then in 2020 when their government toppled, then they had to go back to IMF to ask for the help. Otherwise they were like
their own king. They were saying कि हमें किसी की जरूरत नहीं है. हाँ, इंडिया ने बाद में दिया था, पर उससे पहले काफी डैमेज हो चुका था. जब डैमेज हो चुका था, the government collapse, lot of hue and cry happened in Sri Lanka also. आप एक बहुत ही कॉमन पैटर्न नोटिस करेंगे सारी जगह पे. इफ यू टॉक अबाउट म्यांमार, वहां पे भी टॉपल हुआ गवर्नमेंट. इफ यू टॉक अबाउट बांग्लादेश, वहां पे भी टॉपल हुआ गवर्नमेंट. इफ यू टॉक अबाउट दिस श्रीलंका, यहाँ पे भी टॉपल हुआ गवर्नमेंट. And this is not a coincidence which is happening. That means there is some outside forces who are coming and doing the kind of things which are not accepted in a country for the stability of the country. और जब तक country stable रहेगी, जब तक सोचने का उसका power रहेगा, तब तक क्या रहेगा, चाइना के लिए प्रॉब्लम रहेगा. उसको क्या करना है, टॉपल करना है. यूएसए ने भी बहुत बार ऐसे ही किया है डिफरेंट कंट्रीज में. मिडल ईस्ट पूरा USA has, especially Syria and Lebanon, that area, they have tried to rack it only because they wanted to have they had their own vested interest, right? So similarly goes with China also. We call that as China's expansionist policy, right? They are expanding, they are being aggressive, right? Where they're showing the assertiveness in the area. These terms you can use in the examination: assertiveness, expansion. You can say that they are claiming the ports, and then there is a very strong apprehensions that they are the one who are responsible for the topplement of the government in many countries. पहले क्या था म्यांमार में, Bangladesh was having fine democracy, now they are having, I don't know what they are doing. Next is your Myanmar, they are having a coup, right? That is led by a coup military, right? In Vietnam also they had a good hold, right? Their manufacturing industries are there in Vietnam also. And even Vietnam is having a fine relation with USA as well. So this is what you can see. This is your Red Sea. ठीक है? हाँ, अभी कुछ नहीं किया. Yes, बताइए. ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट है? बताओ. नहीं, गलवान वैली हमारा है. क्लैश हुआ है वहां पे, वो हमारा है. हमारा है ये भी. दिस इज आर्स, लेकिन यहाँ पे अभी क्लैश चल रहा है. दे आर ट्राइंग टू. sorry correct disputed है. ठीक है everyone. Hello, just hold on. Just